Wish you happy Rath Yatra to all of you. Uh, Due to all efforts, our Rath Yatra has completed today. So, thanks to Jagannath, God wishes everything can possible. Due to this pandemic, we all are locked down in home. It's not possible to come out. So, because of that reason, we organize a, counseling session, but it's supposed to finish yesterday, but sir has given interest to do another two class. So today, supposed to it's finished within eight class, but we are going to give you nine and then another two class. So tomorrow, same time 5:30, sir will take the last class. So I welcome to Birendra Sona sir to today's Thank you so session. much, sir. So I don't want much, I mean waste much time. So I just welcome once again to sir and wish you happy Rath Yatra to once again to all of you. So I hand over the session to you, sir. Thank you so much, sir, and same to you. Happy Rath Yatra. Hope gradually students will join. So we'll go into today. Yes, we have Raju, Sahu, then Ashish, Avinash, and all are coming. Good. Well, today we are going to discuss about the unit 24. It talks about or it is about dimension of knowledge society issues of access and equity. Under this course, sociology of development, this dimension of knowledge society issue and access and equity. Because we know the world is a diverse society and the knowledge has not been equally disseminated to all across the world. Some of the developed countries are 100% literacy with 100% high technology, and there is knowledge sharing is quite good. Developing countries are doing quite fine with this generating of knowledge and also disseminating or distribution of knowledge. And what are the issues are there? How the knowledge can be reproduced for the society, for the betterment of the society, and how can they access? How can the society can access it? And what could be the equity? That what sort of people will accept or get it? The contents says that it has an introduction, then technological transformation and human progress, the emergence of information and knowledge society. What is knowledge information society? Skill acquisition and training for work in knowledge society. The other one is knowledge economy and knowledge workers in knowledge society. ICT infrastructure and knowledge dissemination. Dimension of work participation in knowledge economy. Women in knowledge society. Conclusion and further. So, what will be the outcome or what we are going to learn from this unit 24? That we are going to learn from this unit 24 is that we will learn about the origin or emergence of knowledge society in the age of information communication technology, that is ICT. Then we will learn the distinctive features of knowledge society, knowledge economy, and knowledge workers. Then we are also going to learn skill acquisition and knowledge dissemination in knowledge society, dimension of work participation in knowledge economy, and finally, the role of knowledge and ICT in empowering communities. How it has empowered, how it is helping the marginalized sections or the community as a whole or world as a whole. So let's go to this introductory part. That what we see is that the forces of globalization redefine the economic, social, political, and cultural definition all across. What is that? The forces of globalization. As we have already discussed, how globalization has penetrated
ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଟା କୋଉ ଭଳି ଆକାରରେ ଆମର ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଅଛି, ଆମର ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମର କଲଚର ଅଛି, ତାକୁ ରିଡିଫାଇନ କଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ revolutionizing developments in information technology. IT has been revolutionized. IT has been increased. Information technology का बहुत परिमाण रे वर्ल्ड वार सेकेंड ପରେ এটা ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଛାଇଗଲା। ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମୋମେଣ୍ଟମ, ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସୋସାଇଟିର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇ ଆସିଲା ବିକଜ ଅଫ ଦି ରାପିଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡନେସ। ନା ସମାଜର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମାଜର ଯୋଉ ଜଣେ ଜଣ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନା କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ अदर गोटे देश से अन्य देशर इंटरपर्सनल रिलेशन बढ़िला, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़िला एवं अनेक नुआ नुआ इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव नॉलेज सब सोसाइटी को आसिला, जो द्वारा कौन है ना वी हैव कम विथ दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तापर हमें देखिले कि कौन है ना वर्ल्ड वार सेकेंड पर ह्यूमन life has changed altogether and they have thought to have a new knowledge by which the world will have a kind of harmonious living and peaceful living all across the world, and the people will have at least a peaceful life. Then the big role was played during this period is that is because of this information communication technology we came to know what is happening where and how we have to get all ideas, and it is through this ICT. ICT has a great revolution. It has brought all across the world, and it has what it did is that it has initiated या कौन आरंभ कला ना इंफॉर्मेशन टाकू हैंडलिंग कला, ट्रांसमिशन कला, स्टोरेज कला, रिट्राइव कला एवं कौन है ना it has helped for the development or it has helped for the progress of the human society. ता सहित आमे जानिले जे in this emerging society, information knowledge society, knowledge and information and the application of knowledge and information to knowledge generation and information processing, communication become the basic constituents of human progress. ए जो आज तारीख रे आमे जो प्रोग्रेस करछे, आज सोसाइटी जो आमे प्रोग्रेस करिया को जाउछे, ते प्रोग्रेस रो प्रोग्रेस करिवार जो माध्यम गुडाक कौन कौन है आसला ना वी हैव शेयर आवर नॉलेज, वी हैव शेयर आवर इनोवेटिव आइडियाज, वी हैव शेयर आवर समथिंग गुड प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड अक्रॉस। पृथ्वी सारा को हमर जो नुआ नॉलेज आसला, नुआ आइडिया आसला, ताको हम शेयर करले बाय व्हिच एवरीबॉडी और द सम कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड। हमें ये भी देखिबा जे हमें यह देखिए जे इथि जो कौन है ना नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हैज बीन शेयर all across the communities, all across the societies. Then we had also have a network for the betterment of the society. समाजर उन्नति पाई, समाजर भलो काम पाई कौन है ना गोटे कौन कहबा देखो हमें नेटवर्क टा कले एंड आज मध्य कहा जाए, आज तारीख में मध्य कहा जाए प्रेजेंटली ऑल्सो वी कंसिडर इफ यू हैव ए गुड नेटवर्किंग, if you have a good communication, if you have good relation with others, definitely you will get in reverse a good gesture from other or your opponent or you can say your neighborhoods. तो नेटवर्क टा होची आज तारीख पाई बहुत जरूरी एवं आपण इकोनॉमिक हो कि आपण एजुकेशनल सेक्टर हो कि आपण इनकम जनरेशन हो कि आपण कल्चरली इंप्रूव करिया पे चाहछंती, कल्चरल नॉलेज को डिसेमिनेशन करिया पे चाहछंती और यू वांट टू स्प्रेड इट अक्रॉस द वर्ल्ड, सेते बेले मध्य यू नीड नेटवर्क। द प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क द रूल्स ऑफ नेटवर्क is strongly required in this
present society, or presently it is happening. The ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ document ରୁ the World Development Report 1998 କହୁଛନ୍ତି stated that today's most technological advanced economy are truly knowledge-based, creating millions of knowledge-related jobs in area of discipline that are emerged overnight. So World Bank का report कौची ना कौन ना जेहेतु Thank you, sir. Just a minute, please. sir Just students, please mute your mic. Okay, mute your mic. Continue. may I request to call for somebody is call for madam to mute yes, thank you so much. Thank you. Now it is done. Thank you, sir. So the World Development Report narrated that because of this knowledge-based creating knowledge ICT revolution, thousands of millions of knowledge has created all across the world, and we have seen, as I have gave examples, that the call centers or the monitoring centers or the service providing centers are in India, but they are working for the USA based companies. So you can see how ICT has, or the knowledge has created a big space for the youth, those who are educated and those who are learned this ICT. So this is about this introduction, that in the knowledge economy, as distinct from peasant and industrial economy, where economic wealth was produced by using human manual labor and machine respectively, the process of generation, dissemination and exploitation of knowledge produce economic wealth predominantly. So what we have seen is that because of this information communication technology, today also in our country, we have seen that most of the farmers are handling, or they are getting knowledge from this agriculture ministry, all kinds of knowledge, that when they supposed to get the loans, where they supposed to get seeds, and everything they are getting from through their mobile phone. So we can see that even our farmers are also quite mostly using this knowledge. तो आमे कोन देखिले ना आज तारीख रे मध्य ए जो नवा नॉलेज जो ओरिजिन हैला बा नॉलेज जोटा सोसाइटी रे आसीला आईसीटी आकार रे बा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आकार रे एटा कोन हेछि ना एटा आमो आमो आमर देश पई आमर सोसाइटी पई एवं पृथ्वी पई एटा कोन हेछि ना इट हैज हेल्प अ लॉट टू grow up in terms of economy, in terms of disseminating some cultural knowledge. It has helped a lot. So ame eya ame dekhile. तो इठी हमें सब सेक्शन को दिबा जोटी कि से कहउछंती ना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ह्यूमन प्रोग्रेस. ए जो 90s रे जेतबेले कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आसीला जेतबेले कोन हेछि ना वर्ल्ड हैज इंटीग्रेटेड, वर्ल्ड हैज कनेक्टेड ईच अदर. दे हैव we have done a network, we have build up our relation, amar sampark am drodhীভূত kale ame amar relation to kon badele jo dara kon hochi na jo knowledge madhya joti asila knowledge mane dharo for example konosi software gote asila jota ki kichi help he jibo medical science pe to sei jaga re sei knowledge ta ku ବ୍ୟବହାର kara gala. To ethi kwa jauchi na technological transformation has always played a crucial role in the progression of human society. जेतबेले आमे देखिबा जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को जेतबेले आमे आसीबा आमे देखिबा ना जो हाईटेक टेक्नोलॉजी जेतबेले आसीला एटा हमर समाज पई गुटे वरदान हे कि आसीला जोटा कि समाजर जो इकोनॉमिक स्थितिटा को प्रोग्रेस करिया पई बहुत सहायता कला. दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज वाइडली इन्फ्लुएंस्ड on the economic sector, on social sector, on cultural sector, as well as in political sector. ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आसिला एटा केवल माने केवल रही वाला नहीं जे पर्टिकुलर गोटे इकोनॉमिक सेक्टर पई एटा के हम पई आउ हेल्प हेतिला कोठी ना हमर सोशल डेवलपमेंट पई हला, हमर कल्चरल डेवलपमेंट पई हला, हमर पॉलिटिकल
ମାନେ अंडरस्टैंडिंग ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା जोथि ପାଇଁ कि देखा जाए जे इट इज ए गुड innovation or good idea that in 90s it was started. This transformation of human society from pre-industrial or agrarian to industrial and then again to post-industrial has widely been shaped by the innovation of new technology. So, new technology asila जो example mu दउथिली, for example, let's say ultrasound or about in agriculture, one machine is helping lots of thing, doing lots of thing. So गोटे ट्रैक्टर रे ही अनेक हल ही पारुची माने धान कटा ही पारुची. So many more things are happening with one single engine, one single technology. So we can see that it is the helpful innovative knowledge which has been innovated by the human society in 1990s and it has helped a lot in all sectors जोटा कि हमें उदाहरण आकार में देखिले जे नुआ न्यू टेक्नोलॉजी आसीबा द्वारा एटा मध्य हेतिला जे इट हैज एक्सपांडेड द एरिया इट हैज एक्सपांडेड ऑल अक्रॉस द थिंग्स लाइक इट हैज गॉन beyond the unreachable areas also. So नुआ टेक्नोलॉजी आसीला it has helped the capitalist skill development ପାଇଁ ଏଟା helpful ହେଲା लोक मानकर कोन अपग्रेडेशन ପାଇଁ helpful ହେଲା women माने participation कले by which से माने आउ घरे रहिले नै and they have entered into the job sectors and they learn how to use computer or how to use other technologies. So हम देखिले जे so technological transformation haba dwara it has got lots of benefit to the society all across the world. This was characterized by the production of manufactured goods and acquisition of new skill required for industrial manufacture. So ये जो industrial sector में मतलब कौन है ना नुआ innovative ideas गुड़ा को include करा गला जो द्वारा कौन है ची ना हमरो समाज की आज गोटे नुआ मोडे नुआ प्रोग्रेसिव रास्ता रे अछि बोली हमें मानिबा आम नॉट एठी जो गोटे दिया जाय छी डानियल बेल करो एटा कमिंग ऑफ द पोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी रो एग्जांपल दिया जाय छी तो एटा को व्यवहार करू नै दिस इज जस्ट ए टेबल सो आई एम स्किपिंग दिस हमें एठी देखिबा along the time change has also been marked in the pattern of work participation समय सहित कोन हेछि ना समय काल पात्र बोली जो कहउछंती ना समय सहित कोन हेछि अनेक जिनिस रो चेंजेस आछि कोन गुडा चेंजेस आछि ना लोकंकर पार्टिसिपेशन लोकंकर वाइडन ऑफ आइडियाज तांकर जो आइडिया टा मैच्योर हेकि आसिला जो द्वारा कोन हेछि ना लोकंकर पार्टिसिपेशन मध्य इंडस्ट्रियल सेक्टर रे बढ़िला एंड in the wake of industrialization and rapid urbanization, there has been shift in the pattern of work participation from agriculture to non-agriculture economy. हम कौन देखिले ना हमारा जो चेंजेस हमें देखिले पार्टिसिपेशन हमें देखिले जो लोग गुड़ा को एग्रीकल्चर सेक्टर रे काम करते से माने ग्रेजुअली दे हैव शिफ्टेड टू नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स by which तारा नेगेटिव इंपैक्ट भी अछि but the positive part is that many people join into the non-agricultural sector in order to boost of their income, in order to enhance their income. निजर income बढ़े अपने निजर देशर income माने growth को बढ़े अपने लोग industry रे अनेक परिमाण participation करें because of this innovative ideas or innovative knowledge. एठी हमें देखिले the wake of the emergence of post-industrial society whereby work participation increased in the service economy including those in the telecommunications, transport and marketing. तो जेतेबेले कि जो post-industrial society आसिला हमें समस्ते जेहेतु सोशियोलॉजी रो अच्छो बोली हमें जदी भाबुचे ताले आबा हमें पढुचे ताले हम कोन करिया पडियो ना डानियल बेल कर गोटे बही अछि कमिंग ऑफ पोस्ट-इंडस्ट्रियल सोसाइटी जे कमिंग ऑफ पोस्ट-इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे आपण माने से लिखि छंती ना आज तारिख रे हम जो घरे बसी की माने वी आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस एट आवर डोर स्टेप मीनिंग दैट दिस Amazon, Flipkart and many more online business
or they are whatever we are ordering, we are not going to the market or any market building or any other what I will say big bazaar or somewhere else. ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଚଏସ୍ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ଏବଂ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ବି ଦେଇପାରୁଛେ। we are replacing, so ସେଇ କଥାଟା ସେ post industrial society ରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଆଇସିଟି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ सोसाइटी रे अनेक परिमाण रे गोटे नुआ कौन कहबा आशा नुआ होप जोटा कि जनरेट हैला by which they are getting all services at their doorstep. So it कौन है छी ना, it has also got a revolution। एटा को रिवोल्यूशन भी हेतिला कोठी ना टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग रे जोटा कि मु कहउथिली ना टेलीकम्युनिकेशन रे समथिंग इज ready in let's say London, and we can get it within 7 days or 8 days in our Bhubaneswar or somewhere in Sambalpur or maybe in any other city. So you can see जे हमें देखुचे ना टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट एवं मार्केटिंग जो आईसीटी रिवोल्यूशन होगा द्वारा है, by which we have got tremendous connection, tremendous social relation among us. तापरे एठी हमें देखुचे जे एटा केवल जे संपर्क बढ़ेला तानो, it has also boost of our economy, it has also enhanced our economy, it has also we share our cultural ideas, we also share our political ideas, how we can be peaceful। जैसे कि फॉर एग्जांपल आमे देखिबा गांधीयन मेथड को जो गांधी पर जो नॉन वायलेंस मेथड टा को नाउ इट इज ऑब्जर्व ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, so आमे देखुचे इट इज a kind of idea by which the world may be peaceful। so এটা কেমিতি হে পারলা না, it is through this information communication system, because we inform people, we share our ideas। गांधी कर आइडिया को हमें शेयर करले that how we can be peaceful in this society। it was only happened because of this ICT revolution। तो एठी यह भी देखा गला ना अनेक जो लेबरर से माने ब्लू कलर व्हाइट कलर ए सब हेबा को बसिले because of the online education system, or you can say the distance education mode। along with working in industrial sector, they also enroll in some higher education institution। हमें अनेक जगह रे हमें देखिचे ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे जॉइन करी मध्य इंडस्ट्री काम करी मध्य अनेक यंग मासेस से मानकर एजुकेशन टाकू से बढ़े पारथिले, by which they also enhance their job एम्प्लॉयमेंट टाकू से गोटे पोजीशन रो अन्य पोजीशन को मध्य निकले। फॉर एग्जांपल आज जे जने स्किलफुल फिटर अच्छी बा मैकेनिक अच्छी थ्रू डिस्टेंस मोड रे एजुकेशन नेगी से आज होय तो इंजीनियर रे परिछंती एमिति भी अच्छी बहुत गुडे एग्जांपल। सो यहा हवा द्वारा नाउ वी हैव गॉट a beautiful knowledge sharing society, a knowledge sharing society where कौन सी knowledge आ लुचि की रहला ने, because everybody has to use that। patent रहला, patent would be there, किंतु knowledge जो sharing टा सेटा समस्त पाखु गला। तो आमे ए आमे देखुछे ना ए जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आसीवा द्वारा द ह्यूमन सोसाइटी इज अंडरगोइंग द थर्ड वेव, दैट इज एटी कोन ए जो अल्विन टफलर गोटे तीनटा वेव रो कथा कहउछंती। द इंफॉर्मेशन वेव व्हिच वाज मार्केड अमंग अदर्स बाय एक्सप्लोजर डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट। सो आज तारीख रे आमे जोटा हम कहउथली दानियल बेलिंकर एग्जांपल दउथली ना, आज आमे जो प्रेजेंट सोसाइटी रे देखुचे इट इज कंप्लीटली ए डोमिनेशन ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट। सर्विस एम्प्लॉयमेंट मींस that you are not supposed to go to the industries, there is machines are working, so machine रे ही काम होउची। what the humans are doing, they are just providing service माने धरो तो कोनोसी Amazon रो कथा जति गुटी एग्जांपल नेबा, Amazon रे आज माने माने हजार करोड़ रुपीस रो व्यापार ही करछि। एंड व्यापार हेबार कारण होउची ना थ्रू इंफॉर्मेशन, थ्रू फोन और थ्रू नेटवर्क्स everything is happening, and there are millions of people are working। so the Toffler's Alvin Toffler's for first, second or third wave एटी लेखा है ताकू दिका में बुझिबा। in his book the third wave, Toffler described three types of society based on the concept of waves।
waves माने होची ताकू हम कोन कहबा लहरी लहरी जोटा आसुची समुद्र रे सेही आकार एठी बुझियो पड़ियो तो waves होची कोन ना फर्स्ट वेव रे कोन हेतिला द फर्स्ट वेव is the society after agrarian revolution and replaced the first hunter gatherer cultures जो hunting gathering society टा थिला जोटी fruits and roots collection society थिला सेटा होची फर्स्ट सोसाइटी टा जोटा कि जो agrarian revolution टा आसीबा परे hunting gathering टा रिप्लेस ही गला तो the second she कहउछंती that the main component of the second waves were nuclear family factory type education system and the corporations से टफलर कहउछंती ना सेकंड वेव रे कोन आस्थिला हम वर्ल्ड रे हम सोसाइटी रे ना सेटा होची ना न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली और रहिला नै बा जॉइंट फैमिली रु समस्त जो माने शहर को आसिले से डेफिनेटली न्यूक्लियर है कि आसीबे कारण दु जण कि चारि जण आसिले पिला छुआ नै कि तो निश्चय से माने कोन न्यूक्लियर अछंती जॉइंट फैमिली भांगी गाँ छाड़ी जेतोल आसंती शहर को इंडस्ट्री सेटअप बा अर्बन सेक्टर को जेतोल से आसंती डेफिनेटली इट लुक्स लाइक ए न्यूक्लियर फैमिली फैक्ट्री टाइप एजुकेशन फैक्ट्री टाइप एजुकेशन माने इंडस्ट्री गुडा को सेटअप होवा द्वारा अनेक स्किल दरकार हैला अनेक स्किलफुल लोक दरकार हैला जो द्वारा कि कोन ना एजुकेशन सिस्टम बचा फैक्ट्री टाइप देखा गला आउ कॉर्पोरेशन सोसाइटी देखा गला अनेक जगह रे कॉर्पोरेशन सब एरिया टॉपलर्स कहंती the second wave society is industrial and based on mass production ये जो second wave रे हम कोन देखिले ना it is a mass production society mass production it means that's in order to have lots of in order to fulfill the demands supply बहुत परिमाण रे हेबा धरला mass production हेबा को बसिला mass distribution मध्य हला कारण कंज्यूमर बढ़िया को लागिले कंज्यूमर both qualitative and quantitative आकार रे बढ़िया को लागिले कंज्यूमर मास एंटरटेनमेंट लाइक हमरो जो कोन हॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड जो मूवी गुडा को जो कोन कहबा सिनेमा थिएटर्स ए सब मध्य बढ़िया को लागिला टीवी चैनल्स टीवी रो क्रिएटिविटी टीवी कोन कहबा छोटो छोटो सीरियल्स एंड ऑल इट वाज स्टार्टेड ता सहित आउ भी हला कोन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ता सहित जेतबे कोल्ड वॉर पीरियड ता होची 1960 19 माने सेकंड वर्ल्ड वॉर परे पुनी कोल्ड वॉर आरंभ हला कोल्ड वॉर माने ना समस्त को जोगी रखी चलिया पई निजे निजे सब आर्म एमिनेशन बा वेपन सब गोटी जगह रे ठोळ करिया को बचले ता माने कोन ना आम देश मध्य चुप रहला ना कि चाइना मध्य चुप रहला ना कि अमेरिका मध्य चुप तांकर भितरे भितरे सब आर्म एमिनेशन कोन ठोळ करिया को बचले तो ए सब ए जो सेकंड वेव रे हितला तो हमें देखिबा एठी तापरे ए सब को जदी हमें कंबाइन करबा ताहले देखिबा ना थिंग्स आर कम विथ स्टैंडर्डाइजेशन हेबा को बसिला ता सहित सेंट्रलाइजेशन हैला कंसंट्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशंस हैला सिंक्रोनाइजेशन हेबा हैला एथि पे ना गुटी कंपनी से अन्य कंपनी रो रिलेशन बढ़िया को लागला बाय व्हिच दे हैव जनरेट a good connection तो सेठु आउ गोटे जिनिस देखियो को मिलिला ना कोन ना ब्यूरोक्रेसी रो गोटे नुआ कोन कहबा रोल तो ब्यूरोक्रेसी ता सेठी आसिला एंड इट हैज गॉट ए गुड स्पेस थर्ड वेव रे टफलर कहंती ना थर्ड वेव इज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी दैट इज टफलर वुड आल्सो ऐड that since late 1950s most countries were moving away from the second wave society into what he could call the third wave society he coined lots of words to describe it mention name invented by other people like the information age जेमिति कि ए जो थर्ड वेव रे कहा गला ना the third wave is after 1950s it is called as the age of information बा information age बोली कहा गला तो information age एथि पई कहा गला कारण कोनोसी information गोटी जगह रे सीमित होई कि रहला information ता शेयर हेबा को लागला किंतु हमें जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट जने अछंती जोसेफ स्टिग्लिट्ज जदी आपण सुनिथिबे से जो नोबेल प्राइज ता पाइथिले से पाइथिबार कारण होची ए जो information ता आसिला किंतु
इस इनफॉरमेशन टा प्रॉपरली डिसेमिनेशन हे परला नै asymmetrical information बोली से कहंती asymmetrical माने इनफॉरमेशन गुडा को प्रॉपरली सब जगह रे डिसेमिनेशन हे पारे नै आज ही मतलब देखिए अपन माने इन दिस एज ऑफ एवरी कॉर्नर सब जगह रे समस्त घरे प्राय प्राय मोबाइल अछि टीवी अछि किंतु किछि इनफॉरमेशन एबे मध्य लोकन पाहु पहुंचे नै बहुत गुडा एग्जांपल अछि से एग्जांपल गुडा को जेमिति कि फॉर एग्जांपल किछि दिन पूर्व आमे जानि नथिले जे से सिम कार्ड हमर जो जियो सिम कार्ड ता को कंपनी तयारी करछि किंतु एबे आमे रिसेंटली आमे जानि परले तो आमे कोन देखुछे ना इनफॉरमेशन इज ऑलवेज इट इज दो इट इज इनफॉरमेशन इज किंतु किछि इनफॉरमेशन ता लोकन पाखरे पहुंचे नै जोथि पई कि जोसेफ स्टिग्लिट्ज अमेरिकन इकोनॉमिक्स तांकू नोबेल प्राइज दिया जायतिला तो ये जो टॉफलन पर आमे देखिले जोथि कि आमे सिखिले कोन ना he talks about three waves of the society. But the first wave is the agrarian society. Second was the mass production society or engagement of industrial inputs, and the third is the information age or the ICT age. एठी हमें देखिबा जो यूनिट 24 रो 3 नंबर सेक्शन टा the emergence of information and knowledge society ना information किमिति ओरिजिन हैला एवं knowledge society जो सोसाइटी रे ताहार माने कोन कहबा how it has penetrated how the knowledge has established in the society एठी बॉक्स भितरे गोटे देछि बहुत सुंदर आकार लेखा आइछि ताको हमें जीवा पूर्व एठी टिके खाली हमें देखि देबा the roots of information society idea are closely associated with idea of post industrialism तो हमें जो देखिले जो एबे जो हमें डिस्कशन कले ना ए जो इंफॉर्मेशन जो आसिला बा एज ऑफ इंफॉर्मेशन आसिला यार मूल रूट होची पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे जेतेबेले कि ह्यूज परिमाण रे इंडस्ट्री सेटअप हैला ह्यूज परिमाण रे मास प्रोडक्शन हैला लोकंकर डिमांड बढ़िला लोकंको सप्लाई पई मध्ये स्किल्ड लेबर दरकार हैला सो ए ऑल सब होची हमरो कोन कहबा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रो गुटी गुटी कैरेक्टरिस्टिक्स तो एठी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन को देखिबा द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन सच एज टेलीफोन बाय बेल इन 1876 radio by Marconi in 1898 vacuum tube by De Forest in 1906 were landmark invention of technological development ए जो हमें आज जो पाठ पढुछे ए जो ऑनलाइन पाठ पढुछे जहाँ भी देखुछे so you can see the revolution the technological information revolution was started long back that is जो बेल करो जो बेल जो आरंभ करथिले 1876 जो फोन सेठू हमें देखिबा तापरे हमें देखिबा रेडियो मार्कोनी रो तो एई सब होची आज तारीख रो गोटे गोटे माने टू कनेक्ट एवरीबॉडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स टू टीच अदर्स टू टॉट फ्रॉम अदर्स नॉलेज शेयर करबा अन्य पाखु शिखिबा निजे शिखिबा एई सब होची जेते बळकर अवदान जोटा कि आज तारीख रे हमें ताको हमें व्यवहार करूछे तो तो एठी जो बॉक्स टाको मु जाउ नै हमें एठी देखिबा मैनुअल कास्टेल्स तांकर आर्गुमेंट होची द न्यू इकोनॉमी emerged around the world as a result of the current phases of globalization process तो मैनुअल कास्टेल्स कहंती ना जो नुआ इकोनॉमी हमें पृथ्वी सारा देखुछे बा पृथ्वी रे चारिपति जो देखुछे बा इकोनॉमी ग्रो करूची इकोनॉमी फास्टर होची लोकन को मध्य रे संपर्क बढ़ुची एटा हमें देखुछे कोन पई ना बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ये जो ग्लोबलाइजेशन ताको मु तो आरंभ रो ही कहिथिली एटा गोटे एजेंडा भी कहि पारो बा एटा गोटे मंत्र भी कहि पारो किंतु एटा को अनेक समय रे एजेंडा आकार देखा जाय कारण किछि डेवलप कंट्री तांकर प्रोडक्ट को डेवलपिंग कंट्री मानन को बिकिया पई मध्य अनेक समय रे ग्लोबलाइजेशन आधार रे आसीथांती बोली कहा जाय दो लोकल ग्लोबलाइजेशन जोटा मु कहउथली लोकलाइज माने लोकल प्रोडक्ट्स मध्ये इंटरनेशनल मार्केट रे जो बिक्री ही पारुची दो तीनटा उदाहरण मु देथिली साड़ी फ्रॉम संबलपुर और पट्टचित्र ऑफ कोन और पूरी जगह रे एवं आ गुटे होची सौराट
ଏ ଯୋଉ ରାୟଗଡା ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି। So productivity and competitiveness is by and large function of knowledge generation and information processor. ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ବିକଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଥ୍ରୁ ନଲେଜ ଜେନେରେସନ। ଯଦି ନୂଆ ନଲେଜ କିଛି ଯଦି ଇନୋଭେଟିଭ ହେଇଛି, ନୂଆ ନଲେଜ ଯଦି କିଛି କିଏ ଯଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାମାନେ କଣ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଆମାଜନ ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ବଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍। ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଓୟୋ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଓୟୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆସ, ନୂଆ ନୂଆ ନଲେଜ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସମାଜର ବା ସୋସାଇଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ଇନଫର୍ମେସନ ବେସ୍ଡ ସୋସାଇଟି ନଲେଜ ଅର ଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ଅଫ ସୋସାଇଟି। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆଇସିଟି ର ଯୋଉ ନଲେଜ ଅଛି ବା ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ସେଇଟା ସୋସାଇଟିର କଣ ପାଇଁ ନା ସୋସାଇଟିର ବେସ୍ ହେଇଯାଏ, ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ନଲେଜ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଏଜୁକେସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ ନଟ୍ ଓନଲି ଇଗ୍ନୋ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଅଦର ହାର୍ଭାର୍ଡ ଟାଇପର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ହାର୍ଭାର୍ଡ ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ସୋସିଓଲୋଜିର ହେଲେ କି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ହେଲେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ମାନେ 3 ମାସିଆ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଦେ ଆର ଚାର୍ଜିଂ, ଦେ ଆର ଅଲସୋ ଚାର୍ଜିଂ ମନି। ତ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିଲା, ଏଇଟା ହେଇପାରିଲା ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ information, because of this internet, because of this you can say the TV or media all. Thus in the evolving information as the generation, dissemination and application of knowledge becomes the basis of all aspect of knowledge and hence it is called as knowledge society. ଆମେ knowledge society କେତେବେଳେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ information age ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ନୂଆ knowledge ଆମେ generate କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଡେସିମିନେଟ କରୁଛେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ନଲେଜ ସୋସାଇଟି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ନଲେଜ ସୋସାଇଟି। ତ ଏଠି ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 4 ରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନଲେଜ ଅବ୍ଲିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସୋସାଇଟି। ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା। According to Daniel Bell, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କମିଂ ଅଫ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କର ବହି, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଓପିଏସସି କିମ୍ବା ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିବେ ଏଇ ବହି ବିଷୟରେ, ବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କହୁଛି, ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ଉପରେ କହୁଛି। ତ ଡାନିଏଲ ବେଲ का जो इंफॉर्मेशन व नॉलेज सोसाइटी science plays as increased role in the productive forces. Professional, scientific and technical groups will rise into prominence in addition to vast expansion of information technology. Daniel Bell कहउछंती ना ए जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे कोन कोन सब बढ़िबो ना प्रोफेशनल बढ़िबे, प्रोफेशनल रो नंबर बढ़िबो, साइंटिफिक इनोवेशन हबो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हबो, टेक्नोलॉजी नुआ टेक्नोलॉजी आसीबो एवं नुआ टेक्नोलॉजी जरिया रे कोन हे परिबो ना इन्फॉर्मेशन टा एक्सपांड करियो, इन्फॉर्मेशन गुडा को हमें वी कैन शेयर ऑल एक्रॉस, हमें समस्त को पाखरे एटा हमें शेयर करि परिबा। एटा एठी डानियल बेल कहउछंती से एटा भी बुझछंती ना देयर विल बी द न्यू एक्सेल प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। He forecast the growth of new social framework based on the telecommunication, which may be decisive for the way knowledge is created and retrieved, and the character of work and occupation people are engaged in. Step जो मु कहउथिली तांकर जो कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे से एटा कहछंती that we will get all the services at our doorstep। সেই কথাটা সে মানে প্রিসাইজলি যদি আমি বুঝিবা যে the industries will work on the machines and there will be a number of অনেক সংখ্যারে প্রফেশনাল হেবে
प्रोफेशनल गुड़ा को हेल्प करेंगे डाउन द लाइन जो माने थिबे से मान को से हेल्प करेंगे एवं जो द्वारा कौन हबो ना जो कंज्यूमर अच्छंती जो जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर अच्छंती बिकॉज़ ऑल आर नॉट प्रोड्यूसर because there are few producer but there are large number of people are consumers so this consumer रो जो सर्विस कंज्यूमर को जो सर्विस दिया जीवो सेटा तांकरो डोर स्टेप रे दिया जीवो एवं सेही दुनिया रे आमे अछु बोली डैनियल वेल कहंती and how it was happen just because of the social network it is happening because of the good relation or the relation among the nations or you can say the country कारण गोटी समाज सहित अन्य समाज जदि रिलेशन अछि सेठी हमें देखुचे ना we all are getting good benefits or kind of things सेठी डैनियल वेल एग्जांपल अनेक दैछंती information society knowledge and information will supplement labor and capital बोली कहउछंती the Marxian view as the central variables of the economy here the information will be treated as commodity and the possession of information will give more power to its owner तो कार्ल मार्क्स को जदि हमें पढ़ीचे कार्ल मार्क्स को जो आइडियाज रे एटा कहआ जाउछि ना the information will be treated as commodity जो information ता हमें पाउछे सेटा को से कहउछन ना it will be treated as a commodity एवं से जो information ता को जे होल्ड करूछि जे तयारी करूछि सेटा को हमें पावर बोली कि बुझिबा पावर माने जनकर पावर बोली कि हमें बुझिबा कारण सेही जरिया रे से हमकु मॉनिटर करिवो सेही जरिया रे हमकु से कोन करिवो ना रेगुलेट करिवो जेमिति कि किछि इंफॉर्मेशन सोसाइटी को दिया जाय नै ता माने सेटा बिकॉज़ ऑफ they want to play the power it means that they want to hide some information for example चाइना रो अनेक इंफॉर्मेशन बाहर को जाय नै what is happening in China चाइना रो अनेक इंफॉर्मेशन गुडा को तांको सोसाइटी कोन होची इंफॉर्मेशन शेयर करिया पय हमर जेमिति कि नेशनल टीवी चैनल अछि हमर प्राइवेट टीवी चैनल्स अछंती हम we are getting a whole lot of information through this channel social media जरिया रे तांकर सीमित नै तांकर they restrict for example ए जो कोरोना वायरस था it was started Wuhan जो Wuhan to आरंभ होला किंतु से पर्सन कहनांती जे that how it was started okay so you can see that the knowledge टाकू से पावर आकार रे व्यवहार करूछंती बा से इंफॉर्मेशन टाकू से पावर आकार रे व्यवहार करूछंती so this is what Daniel Wells book says so there will be more and more penetration of information into more traditional areas of agriculture manufacturing and service sector जो हम कहउथली ना ए जो इंफॉर्मेशन गुडा को वर्तमान पेनिट्रेट करके गलानी वर्तमान सेटा पहुंची सारिलानी कोठी ना एग्रीकल्चर सेक्टर रे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे एवं सर्विस सेक्टर रे तो हम जोठी गले मध्य हम कोन पाउछे ना वी आर गेटिंग लिटिल बिट इंफॉर्मेशन बट सम इंफॉर्मेशन आर ऑलवेज हाइड किसी इंफॉर्मेशन को लुचै की मध्य रखा जाउछ जो द्वारा कि कोन सोसाइटी ता सेटा एक्टिव हे पारो नै सेटा भी देखा जाय सो डैनियल वेल कहंते new forms of social interaction based on electronic communication devices are replacing older types of social relation जो पुराना relation थिला माने you have to write a letter on a hard copy then you have to post it किंतु आज या सेटा होने just you type few words or few symbols by which somebody can understand जोटा कि हमें बुझी परछे आपण बुझी परछोंती समस्त सोसाइटी अनेक लोक किछि सिंबल जरिया रे मध्ये अनेक जिनिस हमें बुझी पारुछे तो सही कथाटा से कहउछंती ना ए जो सोशल इंटरेक्शन ता सोशल इंटरेक्शन जोटा फिजिकल थिला जोटा लोक जणे जण को देखि परथले बा चिट्ठी पत्र लेनदेन थिला सेही जिनिस आउ वर्तमान होने एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम everything is taking place through electronic communication so you can say it your mobile phone your computer or your television okay you take any examples so these are the information society that it has got into there is more application of IT to overcome the ecological and environmental problems associated with industrialism as well एठी एया भी देखा जायछि ना there is a more application of IT to overcome the ecological and environmental for example recent past जो हमर जो फनी हमें देखिले कि वर्तमान जो गला जो साइक्लोन गला हमें देखिले ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमको बहुत आग्रह ही अवेयर कर देला जे दिस पार्ट ऑफ ओडिशा दिस पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी
affected तो सेठरू आमे लोक मानन को सेई जगह रु हम हटेई कि माने ठीक जगह रे हम थैथान करिया को बसिले तो कोन होचे ना किछि जिनिस ए जो नॉलेज रिवोल्यूशन हवा द्वारा कोन हैछि ना ह्यूमन लाइफ हैज बीन सेव्ड ह्यूमन लाइफ हैज बीन saved in a different way by which many people survive तो आमे एया देखिले सेठी आउ जने अछंती मानुएल कास्टेल से call the emerging society as informational society ता माने all information has been shared किंतु मु गोटे एग्जांपल देथिली दानियल बेल कर सेटा भी माने थाउ नॉट दानियल बेल जोसेफ स्टिग्लिस asymmetrical information बोली मु कहथिली asymmetrical information जोटा कि information ता प्रॉपर्ली शेयर करा जाय समस्त को किंतु आमे ए जो फॉर एग्जांपल चाइना रो जदी उदाहरण नेबा information has not been shared तो किंतु एठी ए जो सोशियोलॉजिस्ट माने सेही माने क्लेम करछंती ना दिस सोसाइटी इज informational it is full of information that you can have information from a far away place within a seconds or within a minutes एटा से कहउछंती now where the process of generation and transformation of information generation has rather become the fundamental sources of productivity and power जोटा कि हमें देखिले जो मार्क्सियन कहंती सेही कथाटा एठी से कास्टेल कहउछंती तो कास्टेल कहउछंती ना that it has become a foundation it has become a base that if you have productive production units or if you have information then definitely you will have that kind of power that is what ये जो कास्टेल कहउछंती ताकू सपोर्ट करी कि स्कॉट लास 1990 रे कहउछंती ना in the information society the sources of power is information the information society the sources of power होची कोन ना information जो information ता लोकन पाखरे जाय power in the manufacturing age was attached to the property as the mechanical means of production तो एठी हमें जो information कथा कहउछे now what goods supposed to be sent to us or sold to the particular people मु जो गोटे एग्जांपल देथिली मोर सेकंड क्लास रे जर्मनी रे जो प्लग गुडा को तयारी होची जो पिन 3 पिन तयारी होची बा तांकर जो अप्लायंस तयारी होची घर यूज पय इट इज ओनली फॉर देयर सोसाइटी जोति पय कि whenever you fly to or if you want to go to any European countries you have to buy a universal adapter or universal plug तो नहीं कि जीवा पड़े तो हमें देखु छे ना that is their power they don't want to disseminate that knowledge to others सेही जो पावर जो मैन्युफैक्चर बा प्रोडक्शन अछि सेटा को से अन्य को बिक्री करिया पे चाहंती रादर ताकू से सेतेबेले बिक्री करथि जेतेबेले से सेटारो माने पेटेंट राइट ता अन्य ऊपर नै कि किछि पैसा पांती जेमिति कि हमरो मेट्रो ट्रेन कथा पड़ी छी हला मेट्रो ट्रेन रो अनेक कोन मशीनरीज जापान रु अना जाई छी तो हमें कोन ना देखु छे ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे मध्य अनेक समय रे कोन होय ना इंफॉर्मेशन ताकू शेयर करा जाय बट इट हैज टू बी सेल it has to be sell by the manufacturer से मैन्युफैक्चरर ऊपर डिपेंड करछि ताकू से शेयर करिवो ना नहीं बा सेल करिवो ना नहीं in the information age it is attached to intellectual property in the form of patent copyright or trademark so that they can be valorized to create profit तो एठी कोन होछि ना आजिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट you cannot theft somebody's work somebody's literature somebody's ideas जदी कौन सी लोकर आइडियाज को जदी हमें शेयर करूछे बा ताकू हमें निजो ये रे व्यवहार करूछे यू हैव टू एक्नॉलेज देम ताकू एक्नॉलेज करियो पड़े किंतु एभले किसी जिनिस अछि जो वस्तु अछि जो कोन कहया इंस्ट्रूमेंट अछि जो इंस्ट्रूमेंट रे कि लोकनकर फायदा हबो बा बेनिफिट पाइबे सेही जगह रे सेही लोकर पेटेंट राइट थाए सेटा को से बिकिबो न बिकिबो ता ऊपर डिपेंड करे so this is what Manuel Castells said there is thus commodification of information and no time for reflection so हमें कोन कले ना हमर जो इंफॉर्मेशन अछि ताकू हमें कमोडिफाई कले ता माने कोन ताकू हमें कमोडिटी आकारे देखिले ताकू हमें वस्तु आकारे देखिले एवं ताकू हमें बिक्री कले मार्केट रे
तापरे से कहउछंती आ सेठी ता ऊपर फण रिफ्लेक्ट करिया पई समय भी न थाय बोली से कहउछंती. In this society, however, it is not the commodification that is driving the informationalization, but the informationalization that is driving commodification. तो से कहउछंती आज तारीख रे कोन देखा जे आज डेट रे बा प्रेजेंट सोसाइटी रे एटा जो कमोडिटी टाकू माने इनफॉरमेशन दोने रादर इनफॉरमेशन जरिया रे कमोडिटी टा बिक्री होची बोली से कहउछंती. In this age of inequality, is less defined in terms of relation of production but more by exclusion. तो एठी कोन देखा जाउची ना अनेक सोसाइटी अछि अनेक अंडर डेवलप्ड कंट्री अछंती जो माने कि वर्तमान डेवलपिंग स्टेज रे भी पहुंची नांती सेही सोसाइटी मानकू सेही कंट्री मानकू वर्तमान सुधा ए जो इन्फॉर्मेशन ता पहुंची पारु नै बा प्रॉपर क्वालिटी कमोडिटी पहुंची पारने एटा कहा जाय जेमिति कि हम इंडिया रे ब्रांडेड क्लॉथ तयारी होय ब्रांडेड क्लॉथ तयारी हुए एवं से गुडा को जोटा बेस्ट क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी सेटा यूएसए को जाए तापरे बाकी जहां रहला दैट इज सोल्ड इन आवर मार्केट इट इज सेड ओके फॉर एग्जांपल जेमिति कि चाइना रो प्रोडक्ट all the best quality product is being sold in European or American market तापरे जहां बळी थिबो सेटा को आम देश रे बिक्री करन तो एटा मध्ये कोआ जाय सो यू कैन सी ये जो इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन एज रे बा ये जो इनफॉरमेशन शेयरिंग एज रे बा जो कोन कहबा हां इनफॉरमेशन एज रे हम कोन देखुछे ना इनइक्वालिटी ता मध्ये अछि एवं फॉर एग्जांपल आज जो क्लास होछि मु देखिछि पाखा पाखी 100 केतेटा कोन स्टूडेंट अछन्ते किंतु फेरु होय तो अनेकंकर जो घर अछि सेठी होय तो इंटरनेट पहुंची पारु नथिबो दो दे हैव स्मार्टफोन थिले मध्ये तांग पाखरे कोन होछि ना इनफॉरमेशन ता पहुंची पारु नै जे आज क्लास होछि कि काली क्लास होछि से इनफॉरमेशन तांग पाखरे पहुंची पारु नै तो एटा हम कोन कहबा ना इट इज एक्सक्लूज हे जाउछन से माने एक्सक्लूड हे जाउछन को जरिया रे ना बिकॉज़ दे आर नॉट गेटिंग इनफॉरमेशन जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस इंटरनेट डेफिसिट इंटरनेट कनेक्शन ता तांको घर पर्यंत पहुंची पारु नै बोली सो दैट इज वन साइड द सोसाइटी that is emerging in knowledge society, one which is characterized by new structure of knowledge, methods of dissemination and the technology that permits and sustain unrestricted access to knowledge and control over it. तो हम कौन देखुचे ना knowledge society रे new structure knowledge टाकू तैयारी करा गला एवं that knowledge has जो methods of knowledge sharing का कौन होची ना that is also different. तो सेही जगह रे कौन होची ना एक्सेस किए करिवो केमिति करिवो इट इज ऑल डिफाइंड बाय द इनोवेटर जो लोकटा इन्फॉर्मेशन बा जो लोकटा नॉलेज तयारी करिछि बा आइडियाज तयारी करिछि द मेथड ता मध्ये से निजे ही तयारी करिछि ताकू से केमिति लोकन पाखरे पहुंचेबो फॉर एग्जांपल आमे गूगल मीट रे क्लास करूछे किंतु जूम रे जदी आमे क्लास करियो वर्तमान जूम रो जो मालिक देखा वाला से चाइना रो लोक किंतु से हलानी 97 रो 1997 रो से यूएसए रे अछंती एवं यूएसए रे रही की से जूम जो ऑनलाइन कोन कॉन्फ्रेंसिंग ता वीडियो कॉन्फ्रेंस से सेठी तयारी करछंती किंतु से ए जो जेतबळे हम इंडिया कहिला नाही वी हैव टू बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट इंक्लूडिंग दिस इंफॉर्मेशन दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम जूम सेतबळे ही हैज कम विथ ए डिक्लेरेशन से डिक्लेयर कला एवं से आपण माने इंफॉर्मेशन पाई परिवे से कहला जे ना मु तो चाइना रे जन्म हेली किंतु मु वर्तमान यूएस रे सिटीजन एवं जहा मध्य मोर कोन टेक्नोलॉजिकल ये अछि सेटा सैन फ्रांसिस्को रे अछि जोटा कि यूएस रे एवं मु सेठी ही अछि किंतु मोर जो वर्कर अछंती किछि वर्कर सब कंट्री अछंती तो चाइना रे मध्य अछंती बोली से कहले तो हम कोन देखिले ना मेथड ऑफ नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन ता मध्य देखा जाए जे जे तयारी करछि से ताको केमिति मार्केट रे सेल करिवो मार्केट रे बिक्री करिवो तापरे thus in the contemporary phase of human society the proliferation of information technology has led to the emergence of mass society that produce knowledge and information on mass scale as the driving force तो एठी हम देखिले तो वर्तमान जो समाज होछि वर्तमान जो स्टेज रे कोन देखुछे ना अधिक परिमाण रे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो उद्भव कोन इनोवेशन होछि एवं से इनोवेशन हेबार कारण होछि ना मास सोसाइटी को देखि कि एवं से नॉलेज को व्यवहार करिया पई तो
as a result ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ନା the rise of the category of knowledge workers who are first replacing both histories traditional groups and the groups of industrial society, the group which is first becoming the center of gravity of the working population. ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାମାନେ ହେଲା କଣ ନା ଆଜି ତାରିଖରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁନି ହି ଇଜ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ ମାନେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଲଞ୍ଚ କଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ କିଣିବେ ସେଇ କଥାଟା ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ନା କଣ ହଉଛି ନା ହାଉ ମଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ଲେସ ଦି ବିଫୋର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓକେ କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଜିଓ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିଓ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଜିଓ ସିମ୍ ରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସୋ ଟାଇମ କୁ ଦେଖିକି ତାର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଦେଖିକି କଣ ହୁଏ ନା ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ବା ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ସୋ which is first becoming the center of gravity of the working population. This group is also becoming the single largest group of the workforce in post-industrial society. तो आमे कौन देखुचे ना ये जो post-industrial society रे कौन हुए ना जो working group अछंती से माने मध्य गोटे consumer रे convert हे जानती by which the benefit goes to the creator, the benefit goes to the producer or the large chunk of the profit goes to the information provider. ठीक अच्छे फॉर एग्जांपल आमे जदी देखिबा गोटे एग्जांपल जदी देबा इफ यू आर राइटिंग ए बुक आपण जदी गोटे बही लिखुछंती एंड इफ यू वांट टू पब्लिश थ्रू Amazon दैट इज सेल्फ पब्लिकेशन बोली कहंती देन you will get 70% royalty ठीक अछि so royalty 70% पाइबे and 30% will be gained by Amazon so you can just think कि से केमिति नॉलेज टाको आपनकर नॉलेज टाको इमीडिएटली मार्केटाइज करि पारुछ so किंतु आमे जदी ट्रेडिशनल पैटर्न दे दिबा जदी आमे बुक पब्लिशर पाकु जिबा से पाखा पाखी 6 मास वर्ष लगे देबो गोटी हमर गोटी बही को पब्लिश करिया पई तापरे से ताको मार्केट करियो so you can imagine how fast is this mind or how fast the information is. It means that these people are uh, investing their time, not the money, because time taku invest korchonti boli this money is they are getting easily. So what we see is that the social and economic dynamics of the knowledge society are widely shaped by the new force of production, influence of the global market and the state. जोटा मु एबे रिसेंटली कहली जोटे कि ये जो न्यू नॉलेज अछि ये जो समाज इकोनॉमिक सोसाइटी को एवं इकोनॉमिक को जो नॉलेज सोसाइटी अछि किए सेव करछि बा किए ताकू नुआ रूप दउछि सेटा होछि न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ए जो Amazon रो एग्जांपल देली हैला इन्फ्लुएंस करूछि से कम पैसा रे इवन सम टाइम गोटे बही जदी आपण मगेबे से बही होय तो डिलीवरी चार्जेस भी न थाउछि हैला तो हम कोन देखुछे ना it is all depends on the how the knowledge has been used. Anthony Giddens हमरो profounding modern sociologist बोली कहा जाए जे कि लंदन रे अछंती तो एंथनी गिडेंस को से कहंती ना ग्लोबलाइजेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी आर द co-constituents of the global information order and that this economy is populated by an active and reflexive citizenry of white workers whose knowledge is the principal source of production and they are non hierarchical in their work environment. Anthony Giddens कहउछंती ना ग्लोबलाइजेशन जेतु एटा होचे इंटरकनेक्टेडनेस कथा एवं नॉलेज इकोनॉमी ये दीटा होछंती माने गोटे पार्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ द सेम कॉइन सेटा से कहउछंती एंड it helps what it helps is that this economy is populated by an active and reflexive citizenry of white workers माने कोन ना से कॉल सेंटर रो कथा कहउछंती बा Amazon रो कथा कहउछंती वायर माने कोन ना हमें देखि जे कॉल सेंटर रे जने पिला जदी बसी थाउची what he is doing or she is doing they are providing service to the consumer तो सेठी वायर माने हमें खंजी थाउचे सब बेले लैपटॉप आ फोन ता सहित कोन कहबा हेडफोन तो ए सब जोटा के मूवी बसी आपण माने बसंती एटा बिसे कहउछंती ना the people are connected wired workers तामाने से कॉल सेंटर रो कथा कहउछंती whose knowledge is the principal source of production and they are non hierarchical in their
work environment. Work environment तांको भितरे hierarchy देखा जाए नहीं. They all are equal. That is what Anthony Giddens, the modern sociologist, says about this knowledge economy. According to Bob Joseph, knowledge can be acquire commodity value after entering the labor market, and once it is made artificially scarce and its access depends on payment of rent. So आजिकल हम देखु छे ना EMI system ही जाइए that the company trusts you, the company believes you that you will repay today or tomorrow. That is why the EMI system is there. So it is a question na the value after entering the labor market and once it is made artificially scarce and its access depends on payment of rent. आमे किछि प्रोडक्ट अछि ताको आमे स्कैर्स करि दउछे स्कैर्सिटी आनि दउछे ना कमी गला आ मार्केट नै फॉर एग्जांपल आज किछि दिन पूर्वरु आलू हैला आलू जेमिति कि हम कोन ए जो ओडिसा रे रेट बढ़ी जाइथिला कारण से कहउछन ना आलू नाही बोली कि तो हम कोन देखुछे ना सेठी सेते बेले डिपेंड करूछि हु कैन बाय हु विल बी द बायर सेटा को से किए किनि पारिबो हु विल बी द कंज्यूमर सेही जिनिस तो कथा एठी से कहउछन बब जोसेफ एठी देखा जायछि knowledge can be transformed into a fictitious commodity by transforming it from a collective resources intellectual commons बोली कहा जाए से कहउछन ना फिक्शन आकरे हमें से कहउछन knowledge can be transformed into a fiction fictitious माने fiction कर कहउछन ना commodity ना केमिति ना it can be transformed it from a collective resources intellectual commons into a intellectual property तो कौन हुए ना गोटे कमोडिटी ताकू पेटेंट करा जाए आपण माने जदि जानि थिबे आलू जो आमे जो चिप्स खाउछे जो लेस हला आ कोन कोन सब जो पिला माने खाउछंती ए जो आलू चिप्स फाइ बोली कि तारो हमर ए जो साधारण आलू आमे जोटा बाजार रे खाउछे नीति दिन एटा न ता पई अलगा वेराइटी रो आलू अछि जोटा कि गुजरात रे कोन चाष करा जाए तो सेठी पई से लेस कंपनी रो तार निजरो पेटेंट अछि यू कैन नॉट कॉपी इट कोनसी चासी ताकू नै कि ता निज जमी रे लगे परिमो से बिहनटा किनिबा पड़िबो से बिहनटा लेस कंपनी बिक्री करू नै हला कारण से तार निजरो सेटा प्रोडक्ट एवं सेटा से चिप्स तयारी करिया पई जे पोटैटो चिप्स तयारी करिया सेटा बहुत सुइटेबल तो सेठी पई से सेटा को दो नै तो एई कथाटा एठी कह जाउची ना कोन ना इंटेलेक्चुअल कॉमन्स इनटू इट बिकम्स ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो फॉर रेवेन्यू जनरेशन सेठी कोन होय ना इनकम जनरेशन पाई रेवेन्यू जनरेशन पाई जो आमे कोन करे ना पेटेंट बा कॉपीराइट ता करि दिए निज पाखरे जोथि पई कि सेटा अन्य माने ताकू किनि कि नियंती एटा भी देखा जाय छी ना ही फोर्स इज आमे एठी देखिबा मु एटा को बफ को मिनिमाइज कर देबा कि चाहू छी शॉर्टकट रे he forces the possibility of forces the possibilities of monopolies in knowledge and information by embedding them in technology standards or legal entrenching in intellectual property rights तो आलू रो जो मु उदाहरण देली लेज रो जो उदाहरण देली this is this exact example काहे कि ना लेज कंपनी मोनोपोली करूची एवं it is selling the lays and it has the seeds are not sold to the anybody तार स्टैंडर्डाइज से कर देछि एवं से तार निज पाखरे सेटा से रखि छ व्हाट वी सी इज दैट this present knowledge system is completely depend on how you are going to make money out of your knowledge so it is following are some of the distinctive features of knowledge society ए जो छोटे छोटे कोन अछि आपको हमें डिस्कशन करी कि हमें नेक्स्ट यूनिट को जीवा the basis of knowledge based development in the knowledge society is the generation dissemination and deployment of knowledge कोन ना जो knowledge based development हे छी एई सोसाइटी रे सेटार मुख्य करा जाय छी तो ना तार कैरेक्टरिस्टिक्स होची कोन ना प्रथमे तो जनरल नॉलेज जनरेट करा गला एवं ताकू डिसेमिनेट करा गला अन्य पाकू पहुंचा गला एवं ताकू अप्लाइड भी करा गला तो सेटा होची गोटे फीचर्स द्वितीय फीचर्स होची कोन इन नॉलेज सोसाइटी साइंटिफिक नॉलेज इज कंसीडर्ड एज एन एसेट and the scientific and technical group will be rise into prominence एठी सेकंड फीचर होची कोन ना नॉलेज सोसाइटी
Scientific knowledge is considered as an asset. Scientific knowledge जोटा भी अच्छी सेटा को गोटे asset आकार रे ग्रहण करा जाउछि, and the scientific and technical group will be raised into prominence. For example, Zoom किंबा ए जो Google Meet आदि तारिख रे जदि देखिबा एटा होछि तांको पई एटा होछि गोटे गोटे asset, एटा को scientific knowledge बोली मध्य कहबो. Social network in a knowledge society is based on the telecom and other communication technology. जो आजिकली हम जो नेटवर्क करूछे सोशल नेटवर्क जो अछि, it is all because of this telecommunication. The other features is that the creation and retrieval of knowledge plays a decisive role in the organization of work and occupation. The occupation which make more and more innovative knowledge will become predominant in this economy. तो ये कहा जाए ना जो economy जो occupation अछि से occupation होछ कोन ना it is more innovative knowledge, it is more kind of useful knowledge for the society by which it is getting prominence in the society. Then another feature is that the knowledge is treated as a commodity and the possession of knowledge gives more power to the owner. For example, मु जो example दोउतली Zoom किंबा Google रो Zoom रे जदि हमें देखिबा that he holds this knowledge as his commodity, that whom he is going to sell, that is depends on him, and because it is a knowledge, so that is that the power is held by himself. जे प्रोड्यूस करिछि ताकू ता पाखरे ए नॉलेज ता रहिला बोली हमें कहिबा एवं से पावर ताकू से प्ले करूछि वर्ल्ड रे. इन नॉलेज सोसाइटी इनइक्वालिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम नॉलेज. तो ए जो नॉलेज सोसाइटी रे कोन ना इनइक्वालिटी ता डिफाइन करा जाय जे लोकन पाखरे पूंजी को नो एठी इनइक्वालिटी ता डिफाइन करा जाय थ्रू एक्सक्लूजन ऑफ नॉलेज, माने सेही नॉलेज रु से लोकन ताकू बाद दिया गला, से नॉलेज से लोकन पाखु पहुंची पारला नहीं. फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल ता मु देली कि आजिकली मु जो मो स्टूडेंट मानकर क्लास नउछि 100 रु 50 टा पिला जॉइन करछन, तो हम कोन देखुछे ना 50% पिला एक्सक्लूड हे जाउछन. ता माने कोन ना तांको पाखरे से सिस्टम ता नहीं, तांको पाखरे स्मार्टफोन नथिबो या तो इंटरनेट फैसिलिटी नथिबो. जदि इंटरनेट फैसिलिटी भी अछि होय तो नेट पैक नेबा पे पैसा नथिबो. सो दीस आर द रीजंस, दीस आर सम ऑफ द कॉजेस बाय व्हिच दे आर excluded from this knowledge sharing. In knowledge society, knowledge is transformed from collective resources, intellectual commons to intellectual property for revenue generation. तो कौन हुए ना knowledge टाको ट्रांसफॉर्म करा जाए किमिति ना through collective resources, ता माने intellectual commons गोटे आइडियाज को तैयारी करिया पई हुए तो 10 जण मिसी करंती एवं सेही आइडिया टाकू से माने बिक्री करंती एवं से इट बिकम्स अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय व्हिच दे जनरेट रेवेन्यू, से रेवेन्यू जनरेट करि पारंती. एठी another feature is that knowledge society will be far more competitive than the earlier society, as knowledge will be key competitive factor for the career and earning opportunity. So it is देखा जाए knowledge society will be far more competitive than the earlier society. So वर्तमान रो जो society अछि completely it is competitive. मु जो कहउथली that rich people invest their time and poor people invest money. तो सही एग्जांपल ता एठी फिट बसुछि. Knowledge in the knowledge society basically exists in the specialized application by specialized expert. तो ये जो knowledge society रे जो special knowledge अछि सेटा special लोकन पाई ही सेटा हुए. For example, अनेक समय रे medical system जदि हम देखिबा, there are good numbers of best numbers of doctors are there and also instruments जो गुडा अछि सेटा समस्त पाई व्यवस्थित हेई पारुने. ता माने अनेक पेशेंट अछन जो माने कि पेमेंट दे पारन. So it means that the specialized knowledge is only fixed for those specialized people, meaning that those who are holding assets. Assets means here property. So ये होची section 4. So section 5 रे होची कोन knowledge economy and knowledge workers in the knowledge society. तो एठी मोटा मोटा जिनिसटा को हमें देखिबा how knowledge economy is. In knowledge economy, knowledge is a public good as this becomes object of wide use. Knowledge economy रे हमें जदि देखिबा, जदि जनकर जदि बिक्री करिवार इच्छा अछि से तार जो क्रिएटिविटी टाको तार नॉलेज टाको
বা ফর এক্সাম্পল লেটস টেক এ বুক which has a very revolution all across the world ସେ ବହିଟା ଧର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରୁଛି ତ କଣ ହଉଛି ନା ଇଟ ବିକମ୍ସ ଏ ଇକୋନୋମି ଫର ହିମ୍ ସୋ ସେଇ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କଣ ନା ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଦିସ୍ ବିକମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ୱାଇଡ ୟୁଜ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିପାରେ the knowledge economy is depend on the generation of knowledge for its prosperity. The knowledge gained by experience is as important as formal education and training. So it is called now knowledge economy depend on generation of knowledge. That what kind of knowledge you are generating, what type of ideas you are creating for the society. It all depends on your ideas, your knowledge, and how much prosperity this knowledge is going to be give to the society এই जो knowledge ଅଛି ସେଟା society को केते परिमाण रे इन्फ्लुएंस କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା डिपेंड କରୁଛି ଏବଂ ଏଟା डिपेंड କରିବ ବା ସମସ୍ତେ ଏଟାର प्रॉफिट ବା बेनिफिट ଟା पाई परिबे सेतेबेले जेतेबेले कि ସମସ୍ତେ फॉर्मल एजुकेशन पाई परिबे स्किल ट्रेनिंग पाई परिबे ଏବଂ दे कैन अप्लाई केवल एजुकेशन तो नो इफ दे गॉट ट्रेनिंग दे शुड आल्सो अप्लाई से कथाटा एटी इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी को जाउछि ये knowledge economy is to become a learning economy in order to utilize its full capacity and to take its optimum advantage so जो जदि knowledge economy अछि and it is for the public and if it is a public good and it has to be widely used in for the betterment of the society definitely we have to see that it has properly utilized by all the society and uh, it has optimized the advantage it has optimized the economy system so ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ the learning means not only using new technology to access global knowledge but also to using them to communicate with others about innovation so ଏଠି learning ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ସେ new knowledge ଟାକୁ access କରିବା କିନ୍ତୁ access କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ यूज करिवा अप्लाई करिवा एवं अन्य को मध्य सेटा कहिबा बा ताकू अन्य को मध्य बुझेबा ता सहित अन्य को आमे कम्युनिकेट मध्य करिवा एवं जो इनोवेशन ता हेछि जो नुवा तयारी हेछि ताकू आमे अन्य को कहिबा से होछि ए जो नॉलेज इकोनॉमी रो मेन इन द लर्निंग इकोनॉमी इंडिविजुअल्स फर्म्स और कंट्रीज विल बी एबल टू create wealth in proportion to their capacity to learn and share innovation. So, कौन हुए? Now, in the learning economy, individual firms and countries will be able to create wealth. How? By disseminating their new ideas, new innovation, new knowledge to the world. Formal education needs to become less about passing on information and focus more on leading people how to learn it. Learning thus becomes a lifelong process in knowledge economy. So ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ରିଚ୍ ପିପଲ ଓକେ ସେମାନେ through out their life they learn they read lots of books they join business conference they join motivational conference so they join financial management conference so କାରଣ each and every rich person in this world they always keep on reading because they learn through the joining the meetings they learn through the activities they learn through what they go through their own life निज जीवन शैली रे निज जीवन यात्रा रे निज सोसाइटी रो जीवन यात्रा रे से जहा देखंती सेठी से सिखंती एवं अनेक कॉन्फ्रेंस अनेक मीटिंग से माने अटेंड करंती by which they exchange the idea कारण आमे कहि परिबा नै जे वारन बफेट बा बिल गेट्स से माने कोनसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करंती नै बोली कि still they attend conference the conference सब एबे भी से माने अटेंड करंती से एबे मध्य मोटिवेशनल स्पीकर मान को सुनंती मुकेश अंबानी हम कहबा ना जे से बिजनेस मीटिंग जोटा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अटेंड करंती से मध्य एबे से मध्य अटेंड करंती so this is what the knowledge economy by which for which you have to go through the lifelong learning process so uh, in the information age as individuals are put in the center of the knowledge and skill based society ame kono dekhuche now because this is information age and people are the center as individuals are put in the center of the knowledge and skills based society
सो लोक मानकु कोन होची ना नॉलेज रो सेंटर रे रखा जायछि एंड बाय व्हिच दे आर गेटिंग स्किल्ड. For example, still I'm not using PPTs and all this Google Meet and also the laptop because still I'm learning. Still I'm not confident. So you can see it is a learning process for me. So ମୁଁ କଣ ନା ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛି ଯେ କେମିତି ନା ବ୍ୟବହାର କରିହେବ both PPT and PPTs କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ through Google Meet ଜରିଆରେ. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଏବଂ so this is all through a learning process. More than ever before, individuals want to master their own lives and expect to contribute to economy and society. So I'm calling this every seconds, every now and then, प्रत्येक मुहूर्तरे किछि ना किछि नुआ innovation आसुचे and it is uh, because of the कौन कहबा curiosity of the person. से लोक जानिया ପାଇଁ चाहूची से लोक ताकू तयारी करिया चाहूची by which the larger society will get benefit out of this new knowledge. The development of individuals as active citizen of society is increasingly given a central place in statement of learning, education and training objectives. So the development of individual as a active citizen, all citizens all across the world are active in this present information age. So kon hochi na by which they are getting this central place because they want to learn, they want to get training, they want to be skillful. So कौनसी लोक मतलब skillful हेवा पे चाहूँ everybody wants to be skillful nowadays. For example आज तारीख में यदि हमें देखिए our parents ये जो video conferencing बा कौन कहबा WhatsApp calling, they are learning and they are using it. Okay, so you can see that it is a learning process every now and then. तो प्रत्येक दिन हमें देखुचे ना इटा होचे learning process बोली हमें बुझिबा. Knowledge workers of the knowledge society are distinctly different from those of the agrarian and industrial society. एटा हमें discussion कले जे जो knowledge society रे workers जो concept ता थिला से workers वर्तमान आउ नाही and it is just using as a symbolic system. So every people are trying to be a kind of skillful people, knowledge sharing people. They want to know, they have security से जानिया ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ବଢୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି. So ଏଠି distinctive features of knowledge workers are noted here. तो ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ characteristics ଅଛି ଏ जो knowledge workers ର knowledge economy ପରେ knowledge workers. The knowledge workers are the leading class of the knowledge society and necessarily the ruling class ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି. So knowledge workers ଅଛନ୍ତି, for example Amazon रो जदि एग्जांपल नेबा सी गोटे सॉफ्टवेयर इमिति थियरी गले बाय व्हिच जेते भी प्रोडक्शन होछि इंडस्ट्री रे से प्रोडक्ट को कि डायरेक्टली सी प्रोड्यूसर ता सहित अटैच कर दोछि ता सहित अटैच कर देबा सहित कंज्यूमर जे अछि आमे आपण जो माने भी हला सो आमे डायरेक्टली सेटा को आमे देखि पारुछे एवं हमर जदि चॉइस हला आमे ताको आमे किनि पारुछे. तो आमे कोन देखुछे ग्रेजुअली आमे देखुछे ना दैट पर्सन इज a ruling class से convert हो जाउछि. So you see that they differ fundamentally from the other groups in history who occupy the leading dominant position in the then value expectation and social position. तो तांकर जो social position तांकर expectation ए सब कोन हुए ना बढ़ी जाए. For example आमे गोटे एग्जांपल जदि नेबा वारेन बफेट जो पृथ्वी रो कोन केबे प्रथम होंती केबे द्वितीय होंती केबे तृतीय होंती धनी व्यक्ति से जदि जेते टंकार भी जदि ब्रांडेड क्लोथ पिंधिबे तांको पई सेटा सेते चीप लागिवो कारण तांको पाखरे अजस्त्र संपत्ति बिल गेट्स फॉर एग्जांपल से जदि कोन 2.5 लाख 3 लाख टंकार घड़ी भी जदि पिंधिबे दो ही डू नॉट वेयर ओके से जदि पिंधिबे तांको पई सेटा बहुत कम दाम रो लागिवो. सो व्हाट वी सी इज दैट दे सोशल पोजीशन एंड देयर डोमिनेशन मेप थ्रू देयर नॉलेज तांकर नॉलेज जरिए रे मैप करा जाय तांको टंका जरिए रे मैप करा जाय पारे नै मेजर करा जाय पारे नै. They gets access to work and social position in knowledge society through formal education and training. एटा कहै अछि जो माने नॉलेज वर्कर अछन जो माने नॉलेज प्रोड्यूस करू छथि सोसाइटी पई बा लोक मानक हित पई से माने फॉर्मल एजुकेशन तो पांती ता सहित से माने क्रिएटिव रुहंती. They are very active and they are very creative people, those who are creating new knowledge for the society.
quantity and quality of knowledge work will differ substantially based on the amount and kind of formal education and training required for particular job. So हम कौन देखुचे ना quantity quality रे मध्य differences टा आसी जाउची that in India only 10% people are rich, okay, and in USA 1% people are rich. ଯଦି ଆମର ଏଇ ଦେଶରେ 10% ଲୋକ ରିଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 70% ପାଖାପାଖି ଆମ ଦେଶର ୱେଲ୍ଥ ଅଛି ତ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ନା everybody is trying to be best, okay, but it won't happen because the knowledge system and the time they have used in a proper way. So ଆମେ ଦେଖୁଛେ proper way ରେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ଟା social position, financial position ତା ସବୁବେଳେ ହାଇ ରେ ରହୁଛି. As formal education occupy the center stage of knowledge society, formal schooling emerged to be the key institution. So कौन देखुचे ना हमें formal education कथा भी देखुचे ना we have to go to the formal education system by which we will create new knowledge. For example, ଆମର distance mode रे हमें +2 science class करेई परियो ना distance mode रे कारण से पिलाटाକୁ ताकू lab रे ताकू practice करिया पड़ियो सेति ताकू formal education का दरकार हबो से लैब रे रही तार लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट रे एंगेज हेले जाई ही और शी विल लर्न अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बोटानी तो ए सब जानिया पई ताकू से लैब जरिया रे जीवा पड़ियो सेति पई फॉर्मल स्कूलिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ता दरकार हेई थाए माने एटा कोउथि पई ना इफ यू वांट टू बी ए नॉलेज प्रोड्यूसर और नॉलेज वर्कर से नॉलेज प्रोड्यूसर बोली कहा जाए. So these are the few points. Then final points we take discussion हम करिवा. The knowledge workers also on the tools of production. जो tools of production अच्छी, for example Google Meet रो जो tools अच्छी सेटा हमें on करूँ somebody is owning, it is by the Google. Okay. And unlike the capitalist society, true investment in the knowledge society is the knowledge of the knowledge workers. So हमें देखुचे ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे कोन ना से माने केवल कैपिटल को इन्वेस्ट करथले किंतु आज तारिख हम कोन देखुचे ट्रू सेंस रे जदी देखिबा नॉलेज क्रिएटर नॉलेज वर्कर से नॉलेज टाकू यूज करिकि से कोन सोसाइटी रो शीर्ष बा टॉप लेवल रे रहि परछि अमेजन रो मालिक जदी तार कथा जदी हम बुझिबा ता पाखरे ता तो कोन कोन कहबा कैपिटल से व्यवहार करिने जस्ट ही हैज यूज्ड हिज आईडिया तापरे आमे देखिबा हमरो कोन रितेश अग्रवाल तार आईडिया केवल व्यवहार कला एवं ओ कंपनी तयारी कला. सो व्हाट यू सी इज दैट इट इज ओनली द knowledge. It is a knowledge investment that determines whether the employee is productive or not rather than the tools, machines and capital the organization furnish. तो एठी देखा जाए जे गोटी कंपनी जदी जने काम करूची से लोकर नॉलेज रो इन्वेस्टमेंट किमिति होची से केते परिमाण रे कारण नॉलेज टाकू यूज करछि ता माने कोन फॉर एग्जांपल लेट्स से somebody working in a private institute or maybe company if he she will be always critical to the company से क्रिटिकल हेले होबो नै रादर फीडबैक देबा पड़ियो से जो फीडबैक ताकू कहा जाय नॉलेज बोली की कारण फीडबैक रे कोन थाए ना फीडबैक रे थाए फुल ऑफ नॉलेज का कारण से लोकटा से कंपनी विषय रे बुझी पारिछि से कंपनी रो माने कोन फाइनेंशियल से कंपनी रो ट्रांसपोर्ट से कंपनी रो कंप्यूटर सिस्टम सब से जानि पारिछि कोठी फॉल्ट अछि सेटा से फीडबैक देई पारे किंतु से कहबो ना एटा नाही भलो नै मु काम करिवे नै सेठी सेटा फीडबैक बोली कहा जाय नै से पई नॉलेज इन्वेस्टमेंट टाकू डिटरमाइन करा जाय एम्प्लॉय टा केते कोन प्रोडक्टिव बोली की एठी आउटी देखिबा सेक्शन 6 रे skill acquisition and training for work in knowledge society. From the preceding section hame dekhiba kono na we will see how this what is it it is about skill acquisition and training for work in knowledge society. So what kind of skill hame ko prokar skill acquire ba receive kale बा को प्रकार ट्रेनिंग आमे नेले सेही ट्रेनिंग ता आम सोसाइटी रो गोटे नॉलेज हेकी रहइबो सेहीटा एठी देखा जायछि एठी हमें देखिबा जे कोन ना it has been increasingly recognized that in the knowledge society people's endowment of skills and capabilities and investment in education and training constitute the key to economic and social development.
तो ये हम कौन देखुचे ना ये जो नॉलेज सोसाइटी रे लोक मानकर स्किल्स तांकर कैपेबिलिटीज एवं से जो नॉलेज को से केते परिमाण रे इन्वेस्ट करूछंती how much formal education they have received and what type of training they have received is all it all will gather for the economic and social developments. So सेठी पई अनेक समय रे एबे फॉर एग्जांपल मु आपण मानकर ऑनलाइन क्लास रे अछि किंतु आम मान पई मध्य कैपेसिटी बिल्डिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एबे ऑनलाइन आरंभ होई काली टू तो हम कोन देखुछे ना फैकल्टी डेवलपमेंट देखा जाउछि जे जो नॉलेज ता अछि से नॉलेज ता एनहांस करि हेबो कि नै तांकु फुनी आउरी हायर जो ट्रेनर अछंती जो माने कि भलो नॉलेजेबल पर्सन सी आसी के मान को ट्रेनिंग हम कोन देखुछे ना वी सी दैट whether this knowledge is helpful for the society as development or not. It is not so much physical capital or human skills, human capital that determines economic growth. So it is not so much physical capital. वर्तमान physical capital रो बा कोन कहबे शारीरिक संपत्ति रो कथा नो बा human skills बा human knowledge रो कथा नो human capital बोली कहल जाए वर्तमान होची ना कोन ना सोशल कैपिटल रो समय बोली कहल जाउछ ना सोशल कैपिटल कोन ना you have to have the good relation good networking good connection with your friends relatives state nations and all across the world by which you will grow so हम रितेश अग्रवाल रो जदी एग्जांपल लिया जाए ताले कोन ना simply he started in India and gradually he has gone all across the world तो हम कोन देखु जे ना एटा फिजिकल कैपिटल नथिला बा जर ह्यूमन कैपिटल नथिला it is just a knowledge which has distributed all across his partner by which he has gone to that level it is the nation's capability to apply knowledge to knowledge itself that is essential to economic development सेति पई कहै जाय सेही देशर जनसंख्या सेही देशर लोकंकर जो नॉलेज अछि सेटा को कंसीडर करा जाय नेशन रो नॉलेज बोली जदी सेही नॉलेज रो कैपेबिलिटी अछि एवं ताकू जदी अप्लाई करा जाय कोन पई ना सोसाइटी रो बेटरमेंट पई डेफिनेटली सेही सोसाइटी टा इंप्रूव करिवो इकोनॉमिक्स are increasingly being built on foundation of information सेति पई हमर जो इकोनॉमिक ग्रोथ बा सोशल डेवलपमेंट बा एजुकेशन डेवलपमेंट स्किल एनहांसमेंट इनकम जनरेशन ए सबु कहार ऊपर डिपेंड करूछि ना इंफॉर्मेशन लर्निंग हैबिट आमे केते लर्न करूछे एवं ताकू केते अप्लाई करूछे हम निजो लाइफ रे बा हम निजो सोसाइटी रे देयर बोथ द क्वांटिटी ऑफ नॉलेज इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एक्सेलरेट सो कोन देखा जाय ना जेते परिमाण रे जे नॉलेज ताकू जदी इंफॉर्मेशन ताकू जदी शेयर करा जाय पारे ताले कोन हबो ना प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज मध्य बढ़िबो हम जानि से आपण मन जानि छन कि नै whenever I write an article or I have a professor he writes an article से आर्टिकल्स ताकू दरखंडिया करी के हमें समस्त को शेयर करू गोटे रॉ डाटा हिसाब रे माने अल्प लेखा हिथिबो प्राय 8-9 पेज गोटे आइडियाज को जनरेट करी के लेखा हिथिबो ताकू हमें हम फ्रेंड सर्कल भीतर ताकू हमें सर्कुलेट करू कोन पई सर्कुलेट करू ना से फीडबैक दियंतु बोली की तो फीडबैक देले कोन होबे ना से भी लर्न करले किछि एवं से आर्टिकल टा कंप्लीट हे गेला बोली तो एटा होछि कोन होय ना नॉलेज प्रोडक्शन रो गोटे वे बोली हमें देखिवा सो एठी अछि गोटे लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटा को कहू नै हमरो एठी जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर अछि जो लास्ट सेक्शन टा एटा को हमें देखिवा ना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज डिसेमिनेशन आपण माने जदी जानि थिबे ए जो हैदराबाद को साइबर सिटी बोली कहा जाए हैदराबाद रे साइबर सिटी हेबा पूर्व सेही ऑफर टा आसीथिला ओडिसा रे साइबर सिटी तयारी होबा पई ता माने ए जो हब टा जोटा अछि आज जो इंफॉर्मेशन टा हमें पाउछे हमें जो एठी बसी की मु बसी भुवनेश्वर रे आपण माने आपनकर जगह रे बसछंती ऑल इज मॉनिटर बाय समवेयर इन हैदराबाद ठीक अछि हैदराबाद रो ताकू कनेक्ट करा जायछि सैन फ्रांसिस्को रे तो हमें कोन देखुछे ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बिल्डअप टा कोन हुए ना गोटे सोसाइटी रो सहाय्य करि थाय जदी साइबर सिटी ओडिसा रे हेई थांदा भुवनेश्वर हेई थांदा डेफिनेटली हमरो हजार हजार जो लोक अछंती से माने चाकरी पाई थांते एठी दे आर नॉट सपोज टू गो टू हैदराबाद आज वर्तमान ओडिया अधिकांश बहुत ओडिया अछंती हैदराबाद so even including my relatives
In knowledge society, not only the creation of knowledge is important, it is dissemination and knowledge sharing with the world around is equally important. ना कौन मुख्य important कौन ना ଆପଣ ଯୋଉ knowledge ଟା create କଲେ ଆମେ ଯୋଉ knowledge ଟା create କଲେ ସେଇ knowledge ଟା ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ disseminate କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ share କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ସେଇଟା ହଉଛି main important by which we will get recognition, we will be identify, ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଆମକୁ ଲୋକ recognition ଦେବେ. So, in this information age, ICT are the main medium for knowledge dissemination. So, जो knowledge भी create होची, either it is indigenous knowledge or it is modern knowledge. সেই knowledge टाକୁ যদি ଆମେ share କରିବା ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ପଠେଇବାର ଅଛି, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, medium ଦରକାର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ information communication ଟା ବହୁତ ବଡ଼ role play କରିଛି. In this information age, the info technological revolution is restructuring the ग्लोबल सोशल इकोनॉमी इक्वेशन. तो ये जो इनफॉरमेशन एज जेहेतु तो कौन होची ना इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी टा कौन करिछि ना रिस्ट्रक्चर कला कोटा को ना ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक को ग्लोबल रो जो सोशल कंडीशन अछि ग्लोबल रो इकोनॉमिक सिस्टम अछि ताको रिस्ट्रक्चर कोछि शिफ्टिंग फ्रॉम इनकम डिवाइडेड टू नॉलेज डिवाइडेड. सो कौन है ना इनकम रो नॉलेज टाको हमें बहुत कौन इंपोर्टेंस देले बाय व्हिच द नॉलेज हैज क्रिएटेड लॉट्स ऑफ इकोनॉमी बोली मध्य कुआ जाए. कारण आम जदि देखिबा हमर जो माने वैल्यूड डॉक्टर जो माने कि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर्स बेस्ट इंजीनियर सब यूएसए रे अछन. तो काहे कि अछन ना दे वांट टू एनकेज देयर नॉलेज से जोटा शिखी छंती से नॉलेज टाको से एनकेज करिया पे चाहौ छंती सेटा को से कोन अधिक रोजगार करिया पे इंडिया रे थिले होय तो सेटा हेई पार न था. तो सेति पई से कौन करते यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को माइग्रेट करके जानते. तो so we stand at the dawn of the new millennium which ushers with it the world of greater interconnectivity accelerating flow of data. So हमें जो एज रे वर्तमान अच्छे इनफॉरमेशन एज रे जो अच्छे एज रे कौन होची ना बहुल परिमाण रे अधिक परिमाण रे इंटरकनेक्टिविटी टा चली छी एवं एटा एक्सेलरेट करूची कौन ना डाटा शेयरिंग को. फॉर एग्जांपल आज तारीख रे कोविड बा कोरोना वायरस रे पृथ्वी सारा मु जानि आपण माने जो कोन कोविड विजुअलाइजर जदी इंस्टॉल करिसंती आपनकर मोबाइल रे आपण माने डेली देखुथिबे वर्ल्ड सारा केते परिमाण रे केते लोक मरुछंती केते पॉजिटिव केते नेगेटिव को कंट्री फ्री हे गलानी कोरोना रो जेमति कि न्यूजीलैंड टा फ्री हे गलानी कोरोना वायरस रो. तो हमें जानि परछु केमिति ना इट इज बिकॉज ऑफ दिस information. This is because of the ICT. Accessibility of the World Wide Web (WWW) is turning world into global village. So ये जो WWW जोटा कि World Wide Web ता कौन करिछि ना सेई जो ग्लोबलाइजेशन रो लोकलाइजेशन करि दैछि बा ग्लोबल विलेज रे कन्वर्ट करि दैछि पूरा पृथ्वीटा को वर्ल्ड को वर्तमान हमें गोटे ग्लोबल विलेज आकार रे मध्य देखुछे. The prediction is not that around 1 billion will be online by end of the 2005. तामने कौन कहूची ए डेटा 2005 रो. सो ताको हमें देखिबा नै तो हमें कौन देखु ना आज तारीख रे जेहेतु हमें कौन सी जगह रे माइग्रेट करूने ड्राइविंग करूने जाउने तो हमें घरे बसी कि हमें समस्त कनेक्टेड अच्छे somehow or other. It is because of this ICT, it is because of the information or information technology. So the greatest advantage of this ICT is it has reached and low cost of technology and data transmission. तो हमें ICT रो गोटे मुख्य बेनिफिट ता कौन देखिले ना it has reached to the very remote corner of the world and it is minimize the cost and data has been transmitted. Data गुडा को अनेको कौन करा गला अन्य लोक मानन को जोगे दिया गला by which everybody is connected each moment. Technically, every individual can have a private or public access to data terminal which connects him to each and every individual. So, हम कौन देखुछे ना either I am a private person or if I am a public person, मु गवर्नमेंट रे थाए कि प्राइवेट रे थाए तो कौन होछि ना मते इंटरनेट जरिया रे मोर जो रिलेटिव्स अछंती मोर जो प्रोडक्ट दरकार अछि मते जो यूटिलिटी दरकार अछि सेही सब मु पाई परुछि. That is what this present society. Knowledge dissemination or knowledge distribution and knowledge sharing in knowledge society depend on ICT infrastructure, which mainly include
telecommunication, computer mediate communication, the internet, mass media, and communication. So these are the some advantage of ICT by which our society has gone into a deep economy as well as social influence, and it has got a worldwide connection to everybody, either it is telephone or all. So uh, what I am going to do is that this is the all. So here I am going to summarize rather going into because each and every section somehow or other it talks about how knowledge has been created, how new innovation has been new innovative has done, and how knowledge has been shared. Knowledge टा केमिति ତିଆରି होची, knowledge केमिति share करा जाउची, सेही सब जिनिस each and every section has saying. So आमे एठी को खाली एठी गोटे section देखिबा, how far the women are received this advantage of knowledge. ए जो knowledge रे women मानकर कोन माने benefit हला एवं how much they have got into this opportunity, how much they have encased, से माने encase केते परिमाण रे करि परले ए जो new knowledge को बा ए जो economy कोन knowledge ता. The emerging knowledge society which are based on global competition, progress in information technology and move towards knowledge based economy pose several opportunity and challenges to women. So women माननकु positive तो आसिला, ता सहित कोन कोन opportunity एवं कोन कोन challenges रहिला ए जो ICT revolution जोगो. New job opportunity for women, ICT revolution हेबा द्वारा information communication आसीबा द्वारा नुआ job सब तयारी हैला. नुआ jobs रे कोन ना every young women they are enter into this field, and many of the software engineers they got into this industries. So software engineer theory hele local formal education paile software re ebong software ku bale तापरे कोन ना अनेक जो सर्विस सेंटर गुडा को अछि, जो कॉल सेंटर जो कहउथिले सेते बेले वर्तमान सेटा को बीपीओ बोली कहउछन्ते, बिजनेस प्रोसेसिंग कोन आउटलुक कोन आउट बोली कहउछन्ते, सेही सब कोन होछि ना सेठी अनेक परिमाण रे यंग मासेस काम कले एंड सेठु 60% पाखापाखि वुमेन रहिले. दिल्ली रे जेतबेले कॉल सेंटर आसिथिला, कॉल सेंटर टाको नेगेटिव आकार रे लोक नउथिले बिकॉज ए जो 2000 रे समस्त बुझी पारु नथिले कॉल सेंटर माने समथिंग इट इज नेगेटिव आकार रे देखुथिले बिकॉज लॉट्स ऑफ गर्ल्स आर वर्किंग. तो से भाउथिले इट इज समथिंग different, but जेतबेले लोक बुझिले ना it is about providing service on how to repair for example computers, or how to repair or how to get recharge of mobiles. एई सब जिनिस ही सर्विस दिया जाउतिला ओवर फोन. तो जने बसिथिला धरंतु यूएसए रे जने बसी एवं तार धर कंप्यूटर खराब हे जाय, तार सर्विस ता एटी इंडिया रे बसी दिल्ली रे बसी जने ताकू थ्रू इंटरनेट बा फोन रे ताकू बुझौथिले. तो हम कोन देखुछे ना जॉब हैज बीन क्रिएटेड, लॉट्स ऑफ जॉब हैज बीन क्रिएटेड फॉर द women, and the most promising potential for women in this creation of a new job at a call center and work involving data processing. The International Labour Organization report telecenters and fax booths have created a quarter of millions of jobs in India in the last 4 years. तमे कोन देखिले ना इवन समटाइम गोटे टेलीफोन बूथ ते तयारी कर देखि सेठी गोटे निजे माने कोन सेल्फ इन्वेस्ट है कि सेटे निजे बसुछंती. तो हम कोन देखुछे ना अनेक आजिकाली जो डीटीपी सेंटर अछि बा टाइपिंग सेंटर अछि, सेही सब जगह रे मध्ये हम देखुछे ना वुमेन मानकर अनेक शेयर अछि. ता माने कोन ना एम्प्लॉयमेंट अनेक वुमेन पाई परिथिले. अनेक बैंक मानकर दरकार हला वुमेन मानकर, तो सेति पय वुमेन माने सेठी मध्ये जोग देले. सो व्हाट वी हैव सीन इज दैट ड्यू टू दिस knowledge society, knowledge economy and information sharing of information, and by the through ICT, what happens was that all the women, those who were used to stay at the home, they started working in this sectors. They created knowledge and they also become a, uh, a kind of nation builders through economic generation.
ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କୋକୋ କୋଲାର ଯୋଉ ସମଟାଇମ୍ କଣ ହେଇଥିଲେ ଚେୟାରପର୍ସନ ହେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ମଜୁମଦାର ଶୋ ବୋଲି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ନା ସେ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ଲେଡି ତ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ନା there are lots of women entrepreneur has come up in this age by which it has got huge attention all across the world by which the women also got an opportunity and there are challenges. The challenges are minimum but the opportunities are created by ICT is more. So ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଲାଇନରେ ଆକୁ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି that after industrialization society moved towards post industrial information age where production dissemination and deployment of knowledge become the foundation of the productivity. And because of this industrialization or post-industrialization, what happened was that social development was taken place, social advancement was taken place, and the knowledge or information society has converted into knowledge economy, and this knowledge economy has become a power for those who are created this knowledge. So to ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା most more number of women got opportunity to work in this sector and it is because of this information communication technology. So with this what I'm going to do is that I'm winding up here. uh, Information revolution and the characteristic features of the emerging society also analyze why and how knowledge becomes the basic constituent of the society. So ଆମେ ଏଠି ଶିଖିଲେ କ'ଣ ନା how this knowledge becomes the foundation for the society because it has a great role to play. It has played indeed a great role by which it has accommodated, it has involved good number of people all across the world for the betterment of the society. So I'm keeping leaving here. Tomorrow we will discuss about the units which we have left out: Brazil, South Africa, এবং the other one is ଗୋଟେ ହଉଛି Brazil, ତାପରେ South Africa, and the third one I don't know, missing it. ତ ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି discussion କରିବା ଏବଂ ତାକୁ wind up କରିବା. So thank you so much for participating in this class and hopefully it is interesting. Uh, Thank you. You all can leave. Now I would like to call Sar. Thank you so much. If you have any question, you can put in our group website.